crime rates on politicians are being increased. सर पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स नहीं है यहाँ पे. Ethics comes everywhere. And who actually rules the country? Persons who are elected and chosen by the people. हम करोल बाग में हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पब्लिक के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ, राजमंत्र में मैं अमरेश राय. अब इनसे हम बात करेंगे एथिकल पॉलिटिक्स होता क्या है और इसकी आवश्यकता कितनी है. व्हाट्स योर गुड नेम? Hello, I am Sandeep. I'm from Tamil Nadu. So I'm preparing for UPSC exams, staying in Delhi. In Delhi? Yeah. Wow. How long you have been in Delhi? It's been more than a year. I'm being here in Delhi. So you are writing your, you have given your pre? Anyone? I'm giving my pre in 24th, like 2024. You are preparing for that? Yeah. All right. So you did your graduation from Tamil Nadu? Yeah, I done my graduation from Tamil Nadu, from PSG Institute of Technology and Applied Research. I'm from basically mechanical engineering background student. Okay, so from engineering you have shifted to? All right. Yeah. So it's not about shifting actually. Yeah. It's about taking the next course of action. Yeah. So what is your subject right in UPSC? So my optional subject is PSIR, which is Political Science and International Relations. And that's what we are going to talk about. May not be international relations at this point in time, but yes, we would be talking about political relations between politicians and voters. Okay. Right? So that's what the political relation we would be talking about. Well, we are trying to understand you have to go through various trainings, preparations before you write your pre, then you write your mains, then you write, you go for your interviews and many things, right? Even after selection, you go for training and then you get your posting, right? Yes. Do you think such things are also mandatory, should be mandatory for politicians? As far as my thoughts are concerned, if you see after getting selected, bureaucrats are in the better base or platform that they are trained in all aspects of that certain job. So they have knowledge about everything that they should be taken care of about the economy, society, etc., people which they want on the daily basis. But if you see about the politicians, most of the politicians, you know that they are not that much educated, and the politicians who nowadays you see there are crime rates on politicians are being increased. So there should be some guidelines or some point should be mandatory for politicians as well, because if we go in that aspect, the thing they take up for the people will be, the standard will be increased. So people will be getting a good standard of the services which politicians can provide, because politicians are the face which they are creating the policies for the people. So if they have good base and good platform on that aspect, so people, at the end of the day, people who are going to get benefited in much higher standard. So as far as your question is concerned, this is my thought about your question. All right, so you are saying, yes, if there is a training, there is a better service provided to the public. That's what, all right. What about ethics? Do you think, there is, what I understand, there is a topic on ethics you generally study in your UPSC and you write examination even on. Yes. Am I right? Yeah, we have a paper on ethics, GS4 paper, we have Right. on ethics. Right. So for officers, ethics is important to even understand and implement. Yes. Correct? What about politicians? This is a big question mark in today's India. So if you take ethics among politicians, I think so it should be much more to be grained in them. Like what I'm telling us, you can see the recent issue which Delhi is getting flood from Yamuna. So there should be ethics and there should be not politicizing the issues.
So I mean that on behalf of ethics, politicians should work on ethical basis, so that it should be like equal and ethical on this kind of issues, not like being politicizing, so that the state government and central government can be worked together in one hand with ethics incorporating in it, so that people get benefited at the end of the day. So ethics comes everywhere in the daily routine of people, so we can't go away from ethics. So it is a very ingrained part of people's life. That's what. So here we are proving that, I mean, you are saying that training and ethics both are really, really important to be into a politician. All right. Who comes first? Indian administration is concerned. Politician or administrator like you are going to be? Who comes first and who actually rules the country? As we are a democratic country, as we everyone know, we as after clearing the exams, we are bureaucrats who work under the politicians or the persons who are elected and chosen by the people. So the politicians and the people who are chosen by the people have the most powerful stance in this concern. So we are the to be simple, we are public servants to work for the public. The main voice of people is with the politicians, not the politicians, the people who chosen by the people. So we are under them and we are like public servants who are working for the people, who are the public voice is coming from the people who are selected by the people. So this is the stance of democratic country and we are like going with it. all right, okay. So what's your good name? सर मेरा नाम स्माइलप्रीत सिंह है। मनप्रीत। स्माइलप्रीत सिंह। स्माइलप्रीत सिंह। यस सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान से हूँ, श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से। So साउथ एंड नॉर्थ। यस सर। All right, very good. साउथ एंड नॉर्थ दोनों लोग मिल रहे हैं एक साथ। All right, so स्माइलप्रीत सिंह। हाँ जी। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर। कितने वर्ष से हैं यहाँ पर? मैं सर अभी ऑप्शनल ही चल रहा है मेरा, मैं 7-8 महीने से हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। ओके। और आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल, अभी मैं वही कर रहा हूँ सर। वही कर रहे हाँ हैं। जी। ओके। हम बात कर रहे हैं कि क्या जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है 3, 4, 5, 6, 8 वर्ष तक आप लोग घिसते हैं, आप लोग खूब मेहनत करते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलती है। यस सर। क्या ऐसी स्थिति पॉलिटिशियंस की भी होनी चाहिए, आपको लगता है? सर ज़रूर होनी तो चाहिए सर, गाइडलाइंस हो कुछ, क्योंकि अगर वो भी अच्छी ट्रेनिंग हो तो दोनों में सर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है, तो पब्लिक वेलफेयर और हो सकता है। राइट, पब्लिक वेलफेयर और हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स और जैसे सर पॉलिटिशियंस हैं, उनका सर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो पॉलिटिसाइज्ड नहीं होता कोई भी इशू। तो अभी ट्रेनिंग नहीं है, आपको लगता है ट्रेनिंग मस्ट कर देना चाहिए, ज़रूरी कर देना चाहिए पॉलिटिशियंस का भी? सर मस्ट तो सर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सर इतना मतलब वेल इन्फॉर्म्ड सर पब्लिक भी नहीं है। आपको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाए और सब कुछ आपके हाथ में दे दिया जाएगा, तो क्या आप ट्रेनिंग मस्ट कर देंगे? सर मस्ट तो सर होनी तो चाहिए, पर सर अभी स्थिति नहीं आई ना वो करने की। आप कर देंगे क्या? नो सर। आप नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप नहीं करेंगे और आपके हाथ में सब कुछ हो और फिर भी आप नहीं करेंगे, तो फिर आप उम्मीद किससे करेंगे? कौन करेगा ट्रेनिंग मस्ट? सर जैसे ये प्रोसेस है ना, आप एकदम से सर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले सर बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। बेसिक एजुकेशन कहाँ नहीं है? सर जैसे आप देख सकते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सब कुछ सर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बेसिक लेवल अगर नहीं है एजुकेशन, तो ये वास्तव में जिम्मेदारी किसकी होती है, पॉलिटिशियन की या किसी और की? सर ये होती तो पॉलिटिशियंस की है सर, गवर्नमेंट की। ठीक है। हाँ जी। तो पॉलिटिशियन को पहले ट्रेन करना चाहिए या पहले प्राइमरी लेवल का एजुकेशन ठीक करना चाहिए? सर साइमल्टेनियसली हो तो अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ जी। तो साइमल्टेनियसली के लिए शुरू तो करना पड़ेगा ना। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं फिर भी आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, करेंगे तो सर ये सर जरूरी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एथिक्स का एक पार्ट होगा। हाँ जी सर। है। पॉलिटिशियंस के लिए कुछ एथिक्स का है क्या? कहीं सुना है आपने?
सर पॉलिटिक्स में कोई एथिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या आप एथिक्स इम्प्लॉय करेंगे? सर एथिक्स तो बहुत ज़रूरी है सर। एथिक्स के बिना तो सर अभी तो आप सर देख रहे हो जैसे गवर्नमेंट भी आ रही हैं सर, आइडियोलॉजी कुछ हो रहा है फिर भी कोलिशन कर रही हैं, तो सर वेलफेयर कैसा होगा? दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ कैसे होंगे? राइट। कुल मिलाकर ये मानना है दोनों ही मित्रों का हमारे इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट विद पब्लिक में, राजमंत्र के, कि ट्रेनिंग भी होना चाहिए और एथिक्स भी होना चाहिए। साउथ भी मानता है, नॉर्थ भी मानता है, सभी लोग मानते हैं। क्या हम कर पाएंगे? तैयारी कर रहा है भारतवर्ष राजमंत्र के साथ। अमरेश राय, आज के लिए बस इतना ही।